Yeah, I think it's all in the writing, and if you're lucky enough to come upon something that has been written well, I think there's more than enough there to kind of draw from. Yeah, I think it's also about the choices, and it's up to you to pick things that don't feel very similar as well, which is something I try to do. But I always find that once you get to the heart of it, and if it's written well, you'll always find a different person in there. And it's up to you to be kind of conscious of trying to not make the same choices as an actor, trying to not, fall back on the same. We all have a toolbox that we kind of go to when things get tough, and to not kind of resist reaching in for that thing that is tried and tested, even when you're shooting. Yeah, so it's really about being honest with yourself, being conscious when you're looking at new material to try and find a new way into it. But yeah, if you're doing your homework and something's well written, you'll always find a new character there. And obviously, if you have the great people to collaborate with, and someone, for example, in this case, it was Sandeep, who had such a clear idea of the world, and what he was going for. I think. Yeah, I think then you make things easier to not kind of repeat yourself. Then if you don't, and there are certain times people don't take this opportunity, and they miss out on this opportunity. So I feel everybody got this opportunity in this film, in this show, and they've grabbed it with both hands and did their best to their capacity. And now it's up to you all to decide कि जो हमने कोशिश की है और दिल से किया, क्योंकि चीज़ अच्छी थी, और क्योंकि अच्छी थी तो सबने दिल से काम किया, सबने अपना आज मतलब कि we all are here because we are proud of what we have done. We are happy with what we have done. Otherwise, why should इतने सब इकट्ठे होते नहीं हैं? Very, very tough. Today, everybody is very busy. Everybody has got so much to do. But when you know that you've done something really special, at least what you feel, what actually we feel, and we've done it with a lot of purity and a lot of honesty, with all this, क्योंकि इंटरनेशनल शो है तो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा ना हो कि लोग बोले नहीं यार उन्होंने बहुत अच्छा किया और आपने नहीं किया. सो वी वर्क इवन हार्डर. हमारे पास वो बजट्स हैं नहीं, द काइंड ऑफ बजट्स. एंड ऑफ कोर्स over there the actors are definitely very, 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 they're so well trained. The training over there is unbelievable. All the theatre actors all have done courses and are brilliant actors, like Hugh Laurie and Tom. They both are both absolutely very seasoned theatre actors. Done a lot of theatre, done a lot of work. You must have seen them only in these kind of films, but उन्होंने बरसों से काम कर रहे हैं उन लोग, बहुत काम किया उन्होंने. And including she's an Oscar winner, and look, you're getting into her shoes. It's not so easy. Then of course Sandeep is the director. She's also an Oscar winner, Susanna, and of course she's won an Oscar. And so डर तो लगता है यार, इन लोग सब ने किया और अभी यहाँ हमको जूते नहीं पड़ जाए. And when people come and say that, there are a lot of people who come and they've said that it's on par, or some people, obviously they're ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, don't take them so seriously, यार उससे better भी है. A lot of people have said that also, कि यार ये थोड़ा एक चीज़ें उसमें हैं जो हमने ज़्यादा कनेक्ट किया है इसके साथ, इस शो के लिए. That makes you feel good. So that's what it is. And I think that's what the reason he says कि obviously हम सब बोल रहे हैं पेपर पे, but पेपर पे है मगर मेहनत भी बहुत की आदित्य ने इस पिक्चर में he's really worked very, very hard. He's really worked hard. And I could see his dedication and his honesty, and he was so earnest, and he, कि जो मेरा capacity मैं अपना best देता हूँ. I'll do my best. And of course, there's a lot of room of improvement for all of us. Okay, we in future will do even better work. And whatever the opportunity we got, we all have tried to do, our best. And I can say that about Aditya and Sobhita के बारे में क्या बोलूँ, वो तो मैं बहुत तारीफ कर ही चुका हूँ उनके बारे में. हाँ. Good afternoon. हाँ. She's so beautiful यार. मेरी नज़र ही नहीं हट रही है. She's so attractive. Yes. She's so beautiful. She's How beautiful she's looking. Isn't she looking nice? Great. Yes. Huh? Yeah.
मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही Actually, the word battle is very strong. Sure, I grew up thinking that okay, maybe I'm not the coolest kid on the block, and that's okay. I don't think it's so much a oh, I was struggling with it or I was battling confidence issues. I don't think it was so steep. But I guess sometimes some of the things you say, they come out in print sounding way more aggressive. Sure, I was nerdy, and I was very geeky kid. So for me, I just didn't think that I would naturally belong in this world because it was just so fantastical. But through the course of my career, 7 years, like you mentioned, I've had the chance to play a variety of parts. Some pretty looking characters, some not, and I think so much is also about connecting with their conflict. When you understand what they're struggling with, or what the character is really dealing with, what are her circumstances, and you focus on that, there's a certain authenticity that comes in. And whatever, and I think I've not always played parts that are supposedly good looking or whatever. And confidence, I think, is not a destination, it's a journey. On some days you feel great, on some days you feel a bit low. Some days I feel like my merit has been validated by some bright minds like you guys, and I feel great. And on some days I'm like, shit, my life is over. I think it's okay, it's a journey. I'm very fortunate that filmmakers put their faith in me and they give me parts that are as glamorous, as intense. It's really a pleasure. I am not burdened by it. This has really been a privilege. See, I'm a very positive person. तो मुझे मैं बिकॉज इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो कम से कम 60 साल हो गए कि मुझे जब से इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बातचीत और फिल्में और एक्टर्स और डायरेक्टर्स और चलना ना चलना, ये सिलसिला तो चलता है, काफ़ी सालों से चल रहा है. तो कभी एक पैच आता है जब 2 साल के लिए ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं, फिर लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है. ये कम से कम मैं ही अपने करियर में 5-6 बार देख चुका हूँ और ऐसा कभी होता नहीं है, ना होगा. ये जैसे हर इंसान के लाइफ में होता है उतार चढ़ाव, बिजनेस में भी होता है उतार चढ़ाव, और कभी उतार होगा कभी चढ़ाव होगा. एंड तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि क्योंकि इस कोविड के वक्त में मुझे लगता है लोगों ने समझने की कोशिश की है कि और मेहनत करें और अच्छी फिल्में बनाएं, और आने वाली फिल्में देखना बहुत बढ़िया होंगी और अच्छी होंगी, क्योंकि आदमी हर ज़्यादा सीखता है. जब ऐसे सिचुएशन होती है तो ज़्यादा सीखता है, और जो नहीं सीखेगा वो फिर ही हैज़ टू पे अ प्राइस. बट आई थिंक पीपल हु आर सिंसियर एंड ऑनेस्ट विद देयर वर्क एंड हु नो देयर जॉब, हु नो देयर क्राफ्ट, उनके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. उनको काम मिलता ही रहेगा और फिल्में चलती रहेंगी, और जब अच्छी फिल्म देंगे तो ऑडियंस आएगी और फिल्म देखेगी, और आपने देखा और आप देखते रहेंगे. दादर स्टेशन या वीटी स्टेशन जहाँ भी उतरते थे बोलते हैं फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे, और जैसे ट्रेन चली जाती सब अपने अपने घर चले जाते हैं और हम एक दूसरे की फिर मिलते नहीं हैं मोस्टली. सो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि काम करते रहना चाहिए साथ में, और मेरी खुशनसीबी है कि काफ़ी लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है. काफ़ी डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्में की हैं, हीरोइंस हैं जिनके साथ मैंने 12-12, 13-13 फिल्म की हैं. अभी आदि के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ और भी काम करूँ, संदीप के साथ और काम करूँ. पता नहीं, तिलोत्मा का तो आई नो शी विल 100%. एंड रवि तो मेरे जैसे पुराने चावल हैं, काफ़ी साल से अरसे से काम कर रहे हैं, और इनके साथ पहली बार काम किया. इनके डैडी को मैं जानता था, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे. एंड तो दोस्ती है, काफ़ी लोगों से दोस्ती है और दोस्ती रहती है. ज़रूरी नहीं होता कि रोज़ मिलना बातचीत करना, मगर हम लोग जब 5 साल या 10 साल या कभी प्रीमियर पे मिलते हैं और कभी कभी पार्टी पे मिलते हैं, तो उसी तरह मिलते हैं जैसे कि बहुत अरसे से मिले हुए हैं. एंड ये बिना ट्रस्ट के तो लाइफ ही नहीं है. ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है. आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा. जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तो मेरे पे संदीप पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि संदीप जो है वो ऐसा ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म,
सो जब वो ओके करता तो मैंने कितनी बार मॉनिटर पे देखा होगा संदीप, हार्डली। संदीप मुझे बुलाता था कि अनिल आगे देख ले, तो मुझे इतना ट्रस्ट था कि मैं मोस्टली 99.9% मैंने कोई शॉट देखा ही नहीं है। कभी कभार थोड़ा कंटिन्यूटी के लिए या कभी कुछ ज़्यादा अच्छा शॉट दिया तो बोला था यार आगे देख ले, बट यूजुअली आई हैव नेवर, इतना ट्रस्ट है मुझे संदीप साहब पर। और जैसे हमारे जो चैनल जिस तरह जो हमारा प्लेटफॉर्म है हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, उन पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। अब तक मेरी जब पहली बार जब शो शुरू हुआ था उनसे बात हुई, उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया, उन्होंने जो भी किया शो के लिए अच्छा ही किया होगा। तो मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि जो भी आदमी, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस फिल्म के अंदर, उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो बिना ट्रस्ट के फिर वो थोड़ा खटास रह जाती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रस्ट पीपल हुम यू आर वर्किंग विद। एंड कभी कभी बिट्रेल हो जाती है, वो बहुत कम होता है, अब आपको दुख भी होता है, बट मैं इस तरह का इंसान हूँ कि रात गई बात गई, नेक्स्ट डे आई फॉरगेट अबाउट इट एंड आई मूव ऑन एंड आई एम एज वार्म एंड एज फ्रेंडली। मैं चीज़ें को आई डोंट रियली होल्ड ऑन टू इट। काफ़ी लंबा आंसर दे दिया ना मैंने। अच्छा था, थैंक यू। Certain roles, yes, need a lot of prep, and something which some roles which are completely opposite to your personality. Right. Because in real life, I am not that overconfident. I am not that flamboyant. I am not so power hungry. I am not, that I will go to any extent to achieve what I have to achieve. It's completely opposite to my. I am very, very people's person. I am quite, as people say, I try to, laugh a lot, smile a lot, energy, positivity, and it's completely opposite to my personality. तो मुझे अपने आप को बहुत कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें मुझे बहुत रिस्ट्रेन करना पड़ता है. I have to be very understated, very low key. So for that, sometimes it becomes little, I have to prep for it so that I'm very, very calm from inside, mentally and physically and spiritually, for me to project that kind of body language and demeanor. And कुछ roles ऐसे भी होते हैं जो which are very much the way I am. So उसके लिए फिर वो इतना prep नहीं होता है. तो I just somewhere there's some roles are there where I just be myself and I do it and I have a lot of fun. Not that that is also easy because so different roles have, जब मैं Ishwar I had to prep a lot, when I did Ishwar. When I did Lamhe, I had to really, I'm not that kind of person, what I played in Lamhe. और जैसे कि जो फिल्में मुझे याद आ रही हैं, आसानी से मशाल जो था, it came very natural to me because मैं चंबूर का था. I am brought up in that kind of an atmosphere of delinquents which were around me. The kind of kids, I've grown up with those kids. So I was very fortunate that early in my career I got those kind of roles which were very much, it came very easy to me. Mashal, Andar Bahar, Karma, these kind of films, and people liked me in those characters. And then slowly and steadily, like Wo Saat Din, Beta, these kind of films, Mr. India, were very, I had to put in a lot of thought to it. And then of course, more important that when I get these kind of films, the writing and direction, director कौन है और writing क्या है, that is very, very important. So मेरी पूरी responsibility है. I become more comfortable when these kind of uncomfortable roles come to me, but the director has that wisdom and experience and he knows what he wants. So then I trust him and I do it. So I'm very careful when these kind of films are offered to me. I remember when Wo Saat Din released, Raj Saab ने कहा था तो he saw the film, he liked my work a lot in Wo Saat Din. And बोलो तू ऐसी फिल्में किया कर, ऐसा तो रोल कोई कर नहीं रहा, these kind of roles. तो मैंने राज अंकल को कहा कि I said you were very fortunate and other directors, and there were such great writers and filmmakers who were making those kind of films, a very selfless, good man, nice man, a decent man who is totally selfless, innocent. To get that kind of innocence and that kind of purity, you need certain kind of director. Like when I did with K. Vishwanath, I did Ishwar. I was just following him.
एंड आई डिड वो साथ में बापू साहब, आई डिड शेखर के साथ मैंने मिस्टर इंडिया किए. तो उसमें उनमें खुद में एक बचपना है, एक मासूमियत है उन डायरेक्टर्स में. Javed Saab, when he is like a kid, he's got a sense of humor. The way he wrote it, so it became very easy. Now Subhash ji is a very fun-loving, very flamboyant, has got a certain kind of body language, he loves music, he's larger than life. So I did those kind of roles with him, so I could follow him and imitate him and do those kind of films. और मेरी तारीफ हुई उनकी वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से I could do those kind of roles. So I've been, different preps होते हैं for certain roles and certain films. But once we have a great filmmaker behind it, or a good filmmaker and good writing, then half your or 70% of your battle is won. And then you just have to you just have to work as much as you can, but the director takes care of you. So I'm basically a director's actor. So the prep depends on whom I'm working with, what role it is, from film to film. Yeah. And I think it's a childhood thing, because my dad was in the Air Force, and every 4 years we moved to a new place. And we learnt a new language, met new people, went to a new school. And of course, then I never wanted to be an actor. But I think it was a preparation for the future. And I feel the same way. I played a maid in my first film, Monsoon Wedding. But the representation of, of a class that is less fortunate was depicted in such a romantic, magic realistic way. I didn't realize actually that I would have to bear the cross of having played a maid, a domestic worker, and that directors could only imagine me to play a certain class. And initially in my career, I didn't have much of a choice. I kept taking those roles where I played marginalized characters. I played people who were from a poorer, economically impoverished background. But as my bank balance grew and as I grew older, I started feeling a sense of anger that I'm actually making money from playing a certain class that I don't belong to. I'm not poor and I'm not rich. I'm just an actor. I should be allowed to play both, And it took a few filmmakers to take that risk and imagine me differently. But yes, I was definitely bored, and I love what I do. So it's really something that I thought hard about it. I had a completely different academic career planned. I left that for this because I love it, so I can't make this just a job, which I will just repeat myself ad nauseum. I can do many other things to earn money. I think Night Manager is also an example in that, where Sandeep imagined me to play someone who can, in a David Goliath story, who can, and a character that is pitted against Mr. India. I mean, like, this is as great as it gets, no? Someone who's only done indie films. I mean, what a strange life I have. To think that in my 40s I would be, you asked Mohit, I think, the pros and cons of working with Mr. Anil Kapoor. I think the pros we all know. The con was, I think, shit, I got to take him down. That's what my character, what a fun thing that was, what a ride to do that. But yeah, I would, I'd like to do things that excite me, that makes me want to wake up and go to set, तो खैर, टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस इतना नहीं हुआ है, वो तो सबके करियर्स में आता है, बट हाँ, बीच में लंबा गैप ज़रूर ले लिया था हमने. नरसिम्हा, अग्नि साक्षी, दलाल, इसके बाद बूगी वूगी शुरू हुआ. दैट रैन फॉर अबाउट 15 years. और जब ख़त्म हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि यार अब कुछ नहीं करना. और 10 साल निकल गए. फिर लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन के दौरान मैंने सोचा यार अब कुछ करते हैं. एंड आई डिसाइडेड, let me go back to my first love, that is acting. And थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, लुक ज़रा डिफरेंट हो गया, तो शुरू कर दिया मैंने. I started sending feelers, and Sandeep sir saw me, and he liked the look. तो ये अप्स एंड डाउन्स के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ. 20 साल के बाद एज एन एक्टर वापस आ रहा था, तो 20 से ज़्यादा.
तो ऑब्वियसली थोड़े नर्व्स तो थे. तो घर पे मॉम इन लोग को, ब्रदर को, सिस्टर को मैं बोलता था यार बटरफ्लाइज तो है, थोड़ी पुक पुक हो रही है. सो दे सेड डोंट वरी यार, एक्टिंग इज लाइक स्विमिंग और साइकिलिंग, यू नो, एक बार शुरू करेगा यू वॉन्ट फॉरगेट इट. मैं बोला ठीक है. फिर दोस्तों के साथ एक शाम बैठा, एंड यू नो हाउ फ्रेंड्स आर, तो बड़े ऑनेस्टली मैंने बोला यार थोड़ी हालत ख़राब है. तो एक दोस्त ने बहुत अच्छा बोला, उसने बोला कि यार एक चीज़ याद रख, बंदर को कुछ भी हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं भूलता. तो ये चीज़ मुझे याद रही. एंड आफ्टर दैट या वर्किंग विथ AK सर, मेरे आई थिंक 80% ऑफ माई सीन्स आर विथ हिम. द फर्स्ट डे ऑन द सेट I entered the set in Sri Lanka and it was huge. मैं बोला यार कहाँ आ गया हूँ मैं. और पहला सीन इनके साथ, जानता था लेकिन ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया. But he was so welcoming, he was so warm, supportive, कि मतलब पहला एक आध घंटे के बाद ऐसा लगा इनके साथ काम करके कि हाँ घर आ गया हूँ, I'm back home. So that is how it was, and it's a real pleasure now. I mean, this is definitely what I want to do. So, ना ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस. Acting is acting. आप 70 mm पे करें, आप वेब के ऊपर करें. It's all about, you know, just feeling right about it. और ऐसा कोई मलाल नहीं है. And today there's a very thin line between an OTT platform and a film. So I would say lines are blurred. It's not such a big deal. And I'm very happy I got this. I loved what I did. And yes, that's how it is. Yeah. Anil sir, you had a larger leap of imagination, because I think arms dealers don't roam around Bandra Jew area that often. But I was lucky enough to find a night manager that I could shadow for a while, understand that headspace a bit. My dad was in the army years ago. I picked his brain about what that life is like, and somehow over the course of my life that's always seeped into me from his stories of his past. So yes, I think the imagination is there in every role. You always try and push to see how you can shake yourself free of the things that you've always done and find something new. But yeah, I think Anil sir will have more interesting stories about the arms. I want to repeat it again, that of course first is the great book, fantastic international show, phenomenal writing, Sandeep, Priyanka, all the actors, co-actors, terrific. Couldn't have asked for anything better. And then of course, then I dived into the, that how will I be able, that ना भी काम, ये सब तो हो गया, अब अभी खुद काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. And then of course I started working. So everybody has got his own way of, building his the character, emotionally, spiritually, physically, his voice, his body language. तो वो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है, उसको वक्त लगता है. रात को नींद नहीं आती, रात को सपने में आता है, फिर आप एक बार पढ़ते हो, फिर 200 बार पढ़ते हो, 300 बार पढ़ते हैं, फिर आप उसको बैठ के वही लाइंस को मैं लिखता हूँ, फिर मैं मांझता हूँ उसको, फिर मैं उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर मैं राइटर को भेजता हूँ, फिर मैं डायरेक्टर को भेजता हूँ, फिर उन लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं, फिर बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिर मैं फिल्में देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ, फिर इमेजिन करता हूँ. And it's a process which just goes on and on and on, and it's as Tilotma said, it's so much fun, and that's what we live for, and that gives us जो खुशी, जो ना क्या, what do you do to de-stress yourself? And I feel for me acting is my biggest distress. अगर मुझे de-stress करना है, मुझे खुश होना है, मुझे I want to look my best, I want to feel my best, मुझसे एक्टिंग करवा लो, उससे उसके ऊपर काम, उसके बारे में बात करा दो, कुछ मुझे किसी की परफॉर्मेंस देख लो. तो इसके इर्द गिर्द जितने लोगों ने काम किया था, इस किस्म का काम, इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, इस किस्म कहीं दूर से भी, तो मैं जहाँ से भी कहीं दुनिया की कोई भी फिल्म है, कोशिश करता हूँ कि मैं देख सकूँ. और आजकल तो हम जब हमने करियर शुरू किया तो हमको पूना जाना पड़ता था
फिल्में देखने के लिए, because there was the archives. We used to go there and watch all the great films of Kurosawa and Ray Saab and all those films, because they were not really available. But today everything is available on the tip of the finger. You know, you can do a lot of research, and that's the reason you can see such phenomenal work today of all the actors, Indian actors. The UK, they are on par with all the world-class actors, you know, and of course I was unfortunate that I couldn't do much of theatre, and that's my only regret कि मैं theatre नहीं कर सका. मैंने मेरे ख्याल से 2 play किए हैं, काश मैं और plays कर सकता, because that also is a great experience to be live in front of the audience and you know, perform in front of them. So that's one of my bucket list कि मेरी दोस्ती जो फिरोज़ अब्बास खान से भी हुई थी, हमने वो फिल्म बनाई गांधी माँ फादर, पर हमारी दोस्ती इसलिए होती कि हम प्ले करना चाह रहे थे एक साथ में, मगर वो प्ले तो रह गया. मगर सो दीज आर द थिंग्स यू कीप ऑन डूइंग. सो कभी कभी यू डू अ रोल, यू प्रेप इट लाइक अ प्ले, यू नो, जैसे थिएटर में कैसे करेंगे आप, तो बोलते रहो, फिर वो जब लाइन्स कैरेक्टर उसको फिर भूल जाओ जब सेट पर आते हैं. फिर डायरेक्टर, यू बिकम लाइक अ क्ले एंड यू गो एंड सरेंडर योर सेल्फ टू द डायरेक्टर, एंड द डायरेक्टर मोल्ड्स यू द वे ही वांट्स इट. एंड देन बिकॉज यू हैव प्रेप्ड सो मच, देन आपको वो जहाँ लेके जाना चाहता है वो ले जा सकता है. उतार नीचे ले जाओ, थोड़ा अंडर प्ले करो, थोड़ा लाउड करो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा ऐसी लाइंस बोलो, ऐसी बॉडी लैंग्वेज करो, इसके साथ ऐसा रिएक्ट करो, ये इसका कैरेक्टर है, इसके साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं. तो इसमें इट्स लाइक एन ओशन, you know, I can go on and go on and on, but everybody has different ways of you know, getting life into something which has been written in words, to get it to look, and people can relate and empathize with that character. Either they hate him or like him or love him or whatever it is. So it's and then sometimes, and you're blessed with certain face, you're blessed with certain eyes, you're blessed with certain voice. कभी आपकी आवाज़ कमज़ोर है तो आप अपने आवाज़ पे काम करते हैं. आपकी आंखें छोटी हैं, जैसे मेरी आंखें छोटी थी तो कैसे एक्सप्रेस करूँगा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा थे, बॉडी लैंग्वेज, यू नो, कितनी चीज़ें थी, बॉडी ज़बरदस्त नहीं थी. तो यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन ऑल योर माइनस पॉइंट्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एज मच एज यू कैन. So it's I don't think one lifetime is enough for me to really, you know, really be able to do. There's so much to be done, so much to learn, and so much to look forward to in my life. Yeah.